Okay. Guten Abend. Today we are going to see the next part, the next exercise based on chapter number 5. And before starting the exercise, also let us just discuss about the grammar, what we have to cover today, and based on that grammar, we will go further immediately. Okay. So now this was a thing that we had taken. Okay. Aditi, we have taken this chapter only, right? हॅलो आदिती. Yes. आईन फ्रेंड कोमटच झालेला ना आपला, हा चॅप्टर झालेला ना. हॅलो. Yes, sir. Okay, okay. So now let's see what is the different grammar is there. Okay, so you can see the thing is written over here. Auf Wiedersehen. Okay, and we know what is the Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen means see you soon or bye bye. Okay, but now if you look at the verb is Wiedersehen. Wiedersehen. Actually, Zehen means what? Zehen means to see, and Wieder means again. Wieder means again. So Wiedersehen means to see again, to see you again. So that is a verb Wiedersehen. So now obviously it is separable verb. Separable verb. Now how that auf Wiedersehen, this particular expression came, it came from this particular verb. Now if you bifurcate this verb, then we can see that Zehen is a verb. Sehen. And this is a regular verb. This is a regular verb. So ich sehe, du sehest, er sie sehet, wir sehen, ihr sehet, sie sehen. Okay, this is very simple and regular verb. But here, wieder we have to put at the end of the sentence. So how you can say this sentence? Ich sehe meinen Freund bald wieder. Right? What is bald? Bald means soon. Right? What is the meaning of it? I will or I will see my friend soon. Right? Again means it meaning that same thing. Right? I will see that my friend again soon. Like that. Okay. Now there is one more expression called as shada. Right? Shada, but it came from the verb called as shadan. Shadan means to damage. Shadan means to damage. Right? What is that? What you are damaging? So here it is written Zigaretten schaden der Gesundheit. Cigarettes damages the heart or health. Gesundheit means health. Right? Then Danke, this expression came from the verb danken. Danken means to give thanks. Danken means to give thanks. So wir danken unserem Freund. Unserem. Now unser we have seen, right? Unser means the possessive pronoun of wir. We, us. And here us means it is not us, it is our. So we are thanking our friend. Right? Wir danken unserem Freund. Now always see this particular verb schaden, right? Danken and bitten. Bitten means what? Please. Bitte means please, right? We are saying na bitte wiederholen Sie. Please repeat after me. Right? So bitte means excuse me, please. And bitten is the verb. Bitten is the verb, right? So excuse me, like that only. Okay. So wir bitten unseren Vater, right? Excuse me, or to give a thanks. Please, na please. Bitten means to please. So we pleased our father. Vater means father. Now you can look at this, right? Unseren, unseram, der. All these objects are in dative form. Dative form. What is the meaning of dative form? Nominative
accusative dative, right? So it says that whenever this type of verb came, right, schaden, duncan, beaten, then after immediately after that you are going to put that object is in dative form. सो गेजुंट का मेन और ओरिजिनल आर्टिकल क्या रहेगा? आदित्य, कैन यू टेल? इधर गेजुंट हाइट डेयर लिखा है, बराबर है, बट लेकिन उसका ओरिजिनल आर्टिकल क्या रहेगा? Gesundheiten. नहीं नहीं नहीं, गेजुंट हाइट इज द नाउन, वो तो नाउन है, उसका आर्टिकल, आर्टिकल डेयर डी डस क्या रहेगा? आर्टिकल याद करो, मस्कुलिन D. क्या है? नहीं, हाँ करेक्ट करेक्ट, डी रहेगा मस्कुलिन। इफ यू से डेयर, डेन, डेम, डेसेस, डी डी डेयर डेयर, यानी ये जो डेयर है, दिस डेयर इज अ डाटिव फॉर्म ऑफ डी। सो नाउ आदित्य इज करेक्ट, डाटिव फॉर्म ऑफ डी। सो यू मस्ट नो दिस पर्टिकुलर आर्टिकल्स, राइट? सो डेयर गेजुंटाइट, okay, so schaden, duncan and beaten, these three verbs always take dative form. And what else? What are the different cases? See next, we get s, we get s means how are you, डी का मतलब है डाटिव फॉर्म, डी का मतलब है डाटिव फॉर्म, सो दिस ऑल्सो टेक्स डाटिव, राइट? वी गेट एस, सो वी गेट एस के बाद में, वी गेट एस के बाद में किसको आप पूछ रहे हैं? हाउ आर यू मीन्स डाइनम फाटेर मीन्स यूर फादर, इयरम फ्रेंड, हर फ्रेंड, इयरर फ्राउ, his wife, right? So now you are asking to all of this, right? And whenever you are using this we get s, and if you want to put the noun, right, then you are going to put everything is in dative form. This is a rule. यानी ये पूरा जो हम लोग लेसन सीख रहे हैं, इट इज मेजरली फोकसिंग ऑन द डाटिव फॉर्म, ऑल्सो इट इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन ऑपोजिटिव, लेकिन डाटिव के लिए स्पेशल वर्ब उन्होंने दिया है। How many special verbs are we have learned now? Schaden, Duncan, and beaten. So each danker. Suppose I want to say I thank you, right? So मुझे thank you बोलने का है आपको. So then I will say each danker ihnen, ihnen यानी thank you, right? Each danker, right? Deinem friend, I thank your friend, like that. So whatever I want to put noun, that article should be in dative form. If I am using Duncan, if I am using Schaden, or if I am using beaten, तो ये तीनों वर्ब आपको dative form को लेके जाता है. And apart from that, there is an expression called as we get is. How are you? So we get is also takes whatever you are going to say to anybody. How are what? How are whom? राइट, नहीं हाउ आर, व्हाट इज द नेम, कि कैसे है आप, कैसे हो, आपके फादर कैसे है, आपके फ्रेंड कैसे है, लाइक दैट वॉट एवर. सो एवरीथिंग यू हैव टू पुट इट इन डाटिव फॉर्म, दैट इज अ रूल. नेक्स्ट, वी गेट एस, योर आंसर विल बी व्हाट? डंक, गुड. was marked, was marked, now look at this, was marked, what do you do? Was marked Erika, what does Erika do? The answer is sie geht noch in die Schule. Sie geht, she goes still. Noch means still, still. In die Schule. Now look at this, in die Schule. अभी in die Schule कौन से फॉर्म में है? die Schule कौन से फॉर्म में है आदिति? Is it accusative or dative? Dative. No, accusative. देखो ना, Schule is D only, right? Schule is D only ना? So D there, Sir, there. डी डेअर डेअर ना, मग हा Yes. ऑपोजिटिव्ह कसा असेल, सॉरी डाटिव्ह कसा असेल? ऑपोजिटिव्हच आहे. आणि ऑब्विसली गेहेन टेक्स ऑपोजिटिव्ह फॉर्म ओनली बिकॉज गेहेन इज द एक्शन ना. अपना रूल क्या है जर्मन में? व्हाट इज द रूल? रूल इज एक्शन ऑपोजिटिव्ह, Action. एक्शन ऑपोजिटिव्ह, राइट, एंड पोजिशन डाटिव, एक्शन ऑपोजिटिव एंड पोजिशन डाटिव, ये अपना रूल ही है.
राइट, वो हिल ही नहीं सकता है, राइट. सो नेक्स्ट, zwei Bleistifte und ein Hefte, wie viel macht das? Now two pencils and a notebook, how much it cost, right? How much we feel, how much? Then the answer is das macht ein Punkt zehn Deutschmark. Deutschmark was the currency, now it becomes euro. Machen Sie schnell, right? Der Zug fährt ab. What is the meaning of this? Aditi, what is the meaning of this? Der Zug fährt ab. Departs. Yes, the train departs. Abfahren. Abfahren is a verb. Abfahren means to depart. The train departs. Now see, viel Zeit, viel Geld, vielen Dank. देखो हाँ, viel Zeit means much time. Viel Geld, much money. And vielen Dank, many thanks. राइट. सो जस्ट एंडिंग ध्यान में रखो, एंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. फील डांक कभी नहीं बोलते, फील एंड डांक ऐसे ही बोलते हैं. इश जाग डेन डांक और माइनन डांक फील एंड डांक, राइट. इश जाग फील एंड डांक, आई से मेनी थैंक्स, right, like that. Okay, so now look at these verbs. Öffnen, schließen. What is meaning of öffnen and schließen, Aditi? Hello. Hello. Schließen, close. Öffnen to open. Very nice. Now next, aufmachen, zumachen. Aufmachen, zumachen. Aufmachen and zumachen. This is also important, right? These are actually separable verb. Machen means to do. Machen means to do, right? To do for what and to do from what, right? So that is aufmachen and zumachen. That is the two different verbs. Beaten, danken. Unbeaten, ablehnen. अनबिटन ablehnen. अनबिटन गया था, मालूम है आपको, एक टाइम पे अनबिटन गया था. कैन यू एबल टू रिमेम्बर, कैन यू एबल टू टेल मी व्हाट इज अनबिटन? आदित्य, व्हाट इज अनबिटन? अनबिटन मीन्स टू ऑर्डर और टू रिक्वेस्ट. अनबिटन म्हणजे काय? टू रिक्वेस्ट, टू गिव अ रिक्वेस्ट, टू मेक अ ऑर्डर. वो होटल में जाता है और ऑर्डर करता है. सो दैट वाज द कंटेक्स्ट व्हाट वी रेड लास्ट टाइम. सो ही ऑर्डर्स, ही गिव्स अ रिक्वेस्ट. एंड ablehnen का मतलब है टू रिफ्यूज, टू रिफ्यूज. सो इट्स लाइक एग्जैक्टली अपोजिट. geben, nehmen. geben means to give, nehmen means to take, right? And that is a new verb called as moisten. So now please write, you can make a note of it, moisten. ये लिख के ले लो. I will just tell you how we are going to do it. Moisten. Okay, moisten. One second. Let me take a help of German keyboard. Okay, so umlaut, moisten. Now, what is the meaning of moisten? Would like to, would like to, right? जैसे मतलब ना, I would like to have, or I would like to play music, I would like to play cricket, or whatever it is, so that is moisten. इसमें क्या होता है मालूम है? There are two verbs are coming. I would like to what means I would like to. moisten तो वर्ब है ही है, लेकिन उसके अलावा आपको और एक वर्ब का राइट यूसेज करना पड़ता है. यू कैन नॉट से आई वुड लाइक टू, बट व्हाट यू वुड लाइक टू? You would like to play, you would like to sing, you would like to read, right? So read, write, whatever it is. So there has to be a second type of verb, and that's why this verb is called as modal verb in German. Modal verb. ये ध्यान में रखो. ये थोड़ा सा नया है. वी विल जस्ट टेक केयर ऑफ दिस. हम लोग ये देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. मोस्टन का मतलब क्या है? वुड लाइक टू, right? And would like to, so would like to what? Would like to what means there has to be a second verb along with motion, right? जैसे हम लोग बोलते हैं ना, I can what? I can work, I can read, I can talk. What I can?
So can, shall, will, would like to, all these type of verbs are called as modal verb. अब ये modal verb का concept अभी नया है अपन हम लोग के लिए, right? Because this thing, new thing we are learning. So you can just see, look at this particular concept. Moisten, जैसे ये देखो, ये लोग ने क्या किया है कि ये लोग ने they have not used the second variable along with the moisten, राइट? तो उन्होंने बराबर से सेंटेंस बनाया है, सो द स्टिल द सेंटेंस आर करेक्ट. लेट्स से उन्होंने क्या लिखा है, इश मॉइस्ट काफे, आई वुड लाइक टू हैव कॉफी, फाइन. डू मॉइस्टेस्ट eine Zigarette, you would like to have a cigarette. Er moistes kuchen, he likes what, cakes, or he likes cooking. Kuchen means cooking, लाइक दैट. ओके, सो इसमें वो लोग ने बराबर से जानबूझ के सेकंड वर्ब डाला ही नहीं है, बिकॉज यू पीपल विल नॉट गेट कंफ्यूज, राइट? क्योंकि अभी आप लोग का अभी जस्ट स्पेशल वर्ब, राइट, रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स, ये सारी चीजें हो गए ना. अभी ये वापस नया वर्ब आ गया, मोडाल वर्ब नाम का, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस, सो दैट्स व्हाई. लेकिन वो आएगा ही 100%, अभी नेक्स्ट इसमें आएगा, राइट? लेट्स गो फर्दर, व्हाट इज गिवन ओवर हियर. सो इसमें एक है कि अभी हम लोग ने लिखा है, तो लेट्स कॉन्जुगेट एंड लेट्स डू दिस. इश, डू, एर, एस, जी, एर, एस, जी, then we're, here, he, he, right? So conjugate करा. Aditi, can we conjugate? Ish, moisture, do, moisted, moistest, erezi, moisted, ji, we're, moisten, okay. So we're moisten, ear moisted, एंड झिझी मॉइस्टन. लेकिन इसमें कहानी में ट्विस्ट है, इसमें ऐसा मॉइस्टर, मॉइस्टेस्ट एंड मॉइस्टेस्ट और मॉइस्टेट, ये जो चीजें ना वो नहीं है. यू कैन जस्ट लुक एट द कंटेक्स्ट. देखो कंटेक्स्ट में, देखो जरा, वेयर इज द कंटेक्स्ट. हाँ, सी द कंटेक्स्ट. इधर हमने देखा था क्या लिखा है, डू मॉइस्टेस्ट, दैट इज करेक्ट. हेलो हेलो आदित्य. yes sir, Do moistest, that is fine, right? So do moistest, it is correct. But look at this, air moisture. So over here, this is a rule over here. Ish and air is the form, both are same for modal verb. Ish and air is the form, both are same for modal verb, right? This is only for the modal verb, this is not same for any kind of verb. जिधर जिधर modal verb हम लोग सीखने वाले हैं, उधर ish and air is the form, both are same. So air moisture, ish moisture, right? air is the moisted नहीं, ये wrong है. ओके, तो इसके लिए मैंने पहले कॉन्जुगेशन में लिखा था moisture, but now I have removed that t, and because I have to show you that ish and air is the form, both are same for modal verb. Correct? Have you got it? समझ में आ गया इधर तक? हेलो. yes sir, Okay, बस. So this is very very important. And now let us go to the exercises. Solving ये exercise solve करेंगे, and then we will uh, then we will continue further tomorrow only, right? Because once if you are going further, then it will be very difficult for other people also to cope up with that. Let's start with this. Aditi first, number one. Some Aditi nahi. Now I want another student. Dhruva is there. Yes, sir. Dhruva, sentence वाच आणि हे कर, fill in the blanks. Be proud. Antworted. करेक्ट. सर पुढे दिसत नाही व्यवस्थित. नाही, that is the fill in the blanks. ते लिहिलेलं आहे. Actually Okay, the sorry. answer is given, but that answer that you have to put. It starts with D. That is fine. D is given over there, and after that ER
डेअर पाहिजे, डी पाहिजे का डस पाहिजे का वॉट एव्हर इट इज, दॅट इज युअर आन्सर. So unquoted dash brief trigger. What is brief trigger? The Postman. है ना, okay. पोस्टमन. हा, तो तुम्ही कंटेक्स्ट मध्ये वाचलं असेल व्यवस्थित. क्लिंग द ब्रेफ ट्रिगर क्लिंगेल्ट अँड सो अँड सो फोर्थ. So who is ब्रेफ ट्रिगर? ब्रेफ ट्रिगर is a postman. Okay, that is fine. So it is a dare only. Fine, dare. तर मग आता आन्सर करताना then are you going to put it in accusative form, dative form or what? Tell me. What is the, if you see the meaning is like this. Die Frau antwortet. The lady answers. To whom? तो dash brief trigger. तो इसमें आपको क्या आएगा? Accusative form. ऑपोजिटिव फॉर्म आएगा. वेरी नाइस. तो डेयर का ऑपोजिटिव फॉर्म क्या है? Damn. इधर लिखा है ना, ये देखो. Damn. हाँ, डेम ब्रीफ ट्रिगर. वेरी नाइस. नेक्स्ट स्टूडेंट आर्यन आहे. Yes, sir. हाँ, आर्यन वाच. डी ब्यूशेर. Die Bücher gehören KIND. हा, किंड येते ऍक्च्युली. हा. KIND. किंड म्हणजे चाइल्ड. das Kind. Does kind. Very nice. So even though you are putting it in accusative form, that accusative form it is in accusative. That is does only. Does which are same. समजलं. म्हणून इकडे does kind येणार. पण now there is a कहानी में twist ऐसा है, because we are using the verb gehören. gehören का मतलब है to belong to. To belong to. So here we don't have any kind of action, but here it is position. Position. What is the meaning of it? The books are belonging to children or to child. Damn Kind. Yes. Very nice. So D Bücher gehören dem Kind. Very nice. Next, Aditi. Yes, sir. Herr Robertson dankt Duncan is the verb. Duncan always take. der error. नाही ना, डेअर कुठून येणार? अरे आपण बघितलं ना, डांकन. इधर बघ ना, डांकन, शाडन. हे काय करतात? डाटिव्ह फॉर्म घेतात ना. Ah, sir. मग Den. डाटिव्ह, हा, डेम येणार ना. डेम लेअरर ओन. Der Lehrerin. हा 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 हा, सॉरी हे दॅट इज इन बरोबर आहे. लेअरर इन इज डी, बट इन डाटिव्ह फॉर्म डेअर इज, सॉरी, डी इज डेअर. सो दिस इज Der. करेक्ट. हा, तो परत सांग जरा, परत एकदा वाच. हेअर रोबोटसन. Herr Robertson dankt den Lehrer und der Lehrerin व्हेरी herzlich. नाईस, व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. हेअरलिश म्हणजे काय? हार्टली, बाय हार्ट. ओके. So Mr. Robertson gives the thanks to the teacher and the lady teacher and heartily. समजलं. तो हेअरलिश म्हणजे हार्टली. नेक्स्ट, वेम गेहोरन. नेक्स्ट वाचा कोणीतरी. हु इज देअर? मी सर, आयुष. हा, वाच. आयुष वाच. वेम गेहोरेन डी शाकेन हेयर डेर ब्लास्टिव गेहोर्ट झाकन बोल. झाकन. जाकेन हेयर हियर. डेर ब्लास्टिव गेहोर्ट माइनम. हा, व्हेरी नाईस. गेहोरन इज अ वर्ब ना. आता आपण बघितलं, गेहोरन इज ऑलवेज टेकिंग डाटिव्ह फॉर्म. सो गेहोरन करेक्ट. मायनम झोन नंतर पुढचं काय? डास हेफ गेहोर्ट माइनम डॉक्टर डी ब्यूशर गेहोरेन डास किंड. डस केन येणार का रे? डास किंडर नाही, डस केन येणार का? डस इज रॉंग. तिकडचं बघू नको. त्या मी काय लिहिलंय त्याच्यामध्ये बघू नको. गेहोरन ऑलवेज टेक डाटिव्ह ना. येस सर. डस चार्ट मध्ये काय? डस डेम किंड येणार. डेम Okay. किंडर. हा, करेक्ट. आणि डस हेफ्ट गेहोर्ट माइन डॅश लेअरर आहे ना. मग तिकडे काय येणार परत?
My name मायनम कसं minor येणार? minor. मायनेर, कारण का बिकॉज टॉक्टर इज डिटॉक्टर ना, म्हणून. ओके. Yes sir. Okay, fine. So can you do this exercise at from your side now? Hello. Yes, sir. Okay. So I think we will not go further because lot of things are over here, and if you go ahead, then this thing will get missed by them. तो फिर वो लोग को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे हम लोग को टफ ग्रामर होने चालू होने वाला है. दिस इज अ चार्ट दैट वी आर गोइंग टू सी टुमारो, राइट? एंड टुमारो प्लीज रिमाइंड मी आदित्य की चार्ट घ्यायचा आहे आपल्याला पोजेसिव प्रोनाउनचा, and this exercise also we are going to solve it. Okay, and then we are going to go for the this optionate checks. Okay, Aditi. Okay, sir. ठीक है, ठीक है. Now I will just stop recording. Auf Wiedersehen. Auf Auf Wiedersehen.